Hey guys, welcome back to the channel. So today we're going to be installing the LED lights that I've received from Simtac, and we'll see the difference. How well the new bulbs work. These are all LED bulbs, and the one that I have already on my RTR are the convention halogen bulbs. So it's a very quick and easy DIY. You just have to open your indicators and remove the old bulb and install this new one. So let's start with the DIY. So this is the pattern that I use on the bike right now. I don't try to use any other fancy flashing stuff. And those who are new on my channel and don't know already, I'm already using the Simtac indicator flasher as well as the tail lamp flasher. So tail lamp, I'm using this pattern. Again, I don't use any fancy stuff. And this is the condition of the light, or this is the brightness of the light in the day right now. Okay, let me try to reduce this is, if it is very bright, it'll, if there is too much of sunlight, this will be the color, and if it is dark kind of, this will be the color. But anyways, I'll try to take a video clip again at late night and show you how bright the LED lights are. This is conventional old halogen bulbs inside right now. You can see this is the old bulb inside. I've yet to install the new one. So you just have to open the screw, and once the screw is opened, the lens will come out, and then replace the bulb. Let me show you for the rear left hand side, and then I'll show you for the other sides too. Be careful and hold the indicator too, otherwise if you give too much pressure on this side, the indicator will break. So just unscrew it and take it out. So my first lens is out. You have to be careful while removing it. Once the screw is unscrewed from here, you may slightly insert a screwdriver between the lens and the indicator and try to pop it, but do it very slowly because everything is very delicate and things can break off. Next, you have to pull this bulb out, okay, and keep it aside, and then let me quickly unbox the new LEDs and take them out. No fancy unboxing, but yes, these are the lights. Okay, so you have to match the positive negative. This one's, the conventional ones will work any which ways, negative positive, but these ones won't. So let me try one, putting inside and testing it first. And it's a bit, yeah, this has gone inside. Let me turn on the indicator and check if it's working. Yeah, it's working. सो थोड़ा सा हिंदी में बताने को, मेरे हिंदी भाइयों को, हिंदी दर्शकों को, हिंदी सब्सक्राइबर्स को, हमारे पास आए हैं LED बल्ब्स सिमटैक के पास से। ओके, ये LED बल्ब्स हम बिठा रहे हैं हमारे अपाचे में। मेरे पास ऑलरेडी सिमटैक का फ्लैशर है जो कि यहाँ से ऑपरेट होता है। मेरे पास वीडियो में आगे दिखा चुका हूँ मैं, एंड टेल लैम्प फ्लैशर भी है। इन सभी के परचेस लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, प्लस कूपन कोड भी है, तो आपको ये डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैं उस साइड पे इंस्टॉल कर चुका हूँ, आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये ऑन हो गया है, ये फ्लैशर चल रहा है। उस साइड का ब्राइटनेस देखो, लेफ़्ट साइड का बहुत ही बढ़िया तेज ब्राइटनेस है, विच विल बी वेरी गुड व्हेन राइडिंग इन डार्क वगैरह आप चला रहे हो, जब अंधेरे में चला रहे हो या हाईवे पे चला रहे हो तो बहुत सेफ़ रहेगा। बट हाईवेज़ पे फ्लैशर्स यूज़ मत करना। हाईवेज़ पे फ्लैशर यूज़ नहीं करना है वाइल राइडिंग। ओनली व्हेन यू आर इन अ हैज़ार्ड सिचुएशन, दैट टाइम यूज़ द फ्लैशर। अब बिठाएंगे दूसरी साइड का। मैं यहाँ पे इस साइड का स्क्रू निकाल चुका हूँ। ये बैक साइड पे आपको यहाँ से स्क्रू निकालना है। यहाँ पे एक फोकस कर देता हूँ, यहाँ से स्क्रू निकालना है, एंड उसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से स्लोली यहाँ से टिप करके यहाँ से रिफ्लेक्टर ऐसे बाहर निकालना है और इस तरफ खींचना है। ओके, आपकी तरफ खींच लो, निकल जाए, उसके बाद इसको टर्न करके निकाल लो, एंड पुराना बल्ब निकाल के साइड में रख दो। एंड नया बल्ब फिट करते समय पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखना है,
तो हर बार जब आप एक बल्ब बिठा लो, ठीक है, उसके बाद ऑन करके चेक कर लो कि फ्लैशर चल रहा है कि नहीं, इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं। अगर इंडिकेटर चल गया, अगर बल्ब जल गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपका सही है। ऑल द 4 बल्ब्स आर नाउ इंस्टॉल्ड, चारों बल्ब इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड ये कुछ है, स्टार्टिंग में ऐसे इंडिकेटर चलता है व्हेन आई टर्न ऑन द स्विच। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिमटैक का ही पैटर्न है। देन दिस इज़ द राइट इंडिकेटर, दिस इज़ द लेफ़्ट इंडिकेटर। पीछे का राइट इंडिकेटर और लेफ़्ट इंडिकेटर दिखाता हूँ। ये पीछे का राइट, ये पीछे का लेफ़्ट। टर्न ऑफ। अभी फ्लैशर, ये फ्लैशर का पैटर्न चेंज हो गया, बट मैं वापस चेंज कर दूंगा, बट आपको जस्ट दिखाना था कि हाउ इट वर्क्स। सो द लाइट्स आर नाउ क्वाइट ब्राइट इनफ। एक हो सके तो मैं रात को भी नीचे आके लेता हूँ। अभी तो दिन के सिर्फ 5 बजे हैं, तो क्वाइट ब्राइट है। रात को अंधेरे में कैसा लगता है वो आपको पिक्चर लेके दिखाता हूँ। अगेन परचेस लिंक, कूपन कोड्स, एवरीथिंग विल बी देयर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन. इट इज़ एक्चुअली देयर इन ऑल माई videos का description and first comment. So if you guys want to avail of any discounts available through my coupon codes, you can surely click on that link and follow the steps. And if you have any questions for this one, please do let me know in the comments. Otherwise, like, share, subscribe if you're on my channel for the first time. Thanks for watching. See you in a new video very soon. This is the kind of brightness it has at night. Of course, I can't turn off my headlight, so I can't show you the front one very clearly, but ये आपको बैक साइड पे पता चल जाएगा. It's 9:30 right now, so you can see that the light is quite bright with that LED. पैटर्न चेंज करके देखता हूँ, और लेट मी टर्न ऑफ द फ्लैशर एंड जस्ट टर्न द इंडिकेटर. तो आपको ये अच्छे से पता चलेगा. इसमें ब्राइटनेस लेवल अच्छा पता चल रहा है. इट्स क्वाइट ब्राइट. अंधेरे में काफ़ी अच्छा रहेगा. फ्यूचर में अगर मैं कुछ रील्स वगैरह ले पाया तो नाइट राइड पे वगैरह, तो आपको लेके दिखा दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा. विद दैट सेड, आई एंड द व्लॉग हियर. परचेस लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे. डिस्काउंट कूपन्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे. क्वेश्चंस रहेंगे तो मेरे को पूछ लो. अदरवाइज लाइक, शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. Thank you for watching. See you in a new video very soon. As long as it's with